Screen is visible to all, Yes, sir. and this whiteboard is also visible. No? Sorry, my audio is also my aud- Yes, sir. I Yes, am sir. audible or not? Okay. So today we will study about the nematodes. So first of all, nematodes are also known as roundworms. They are unsegmented. Their sexes are separate, means they are unisexual. Also dies or dies. Yes, their body is covered by cuticle. Body is covered by cuticle. They do not have respiratory, means like animals. They do not have respiratory and circulatory system. In nematodes, most internal organs are suspended in fluid of body cavity. Like in mammals, the peritoneum holds the most of the internal organs, but in the case of nematodes, most internal organs are suspended in the fluid of body cavity. Here, some important point about that cuticle are that in some cases, cuticle may be like special adhesive structure. Cuticle may form adhesive structures like hooks. Hooks are the modification of cuticle only, or cuticle may be likening as in case of gongylon, or it may be in form of cephalic collar in case of five. In many species, there is a lateral flattened cuticular expansions. These are important. Lateral flattened cuticular expansions. They are mainly present in the cervical region. They are mainly present in the cervical region of nematodes, and they are called as LA. So here the important thing is कि LA किस किस में present होता है. So LA are present in esophagostomum and tox ascaris. Example in which LA are present are esophagostomum and tox ascaris. And in case of males, they bear cuticular expansions at posterior extremity.
तो इन दिस द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो आपको द इम्पोर्टेंट थिंग इज जो आपको रिमेम्बर करना है वो है एलए। एलए किस किस में प्रेजेंट होता है? इसोफेगस में टॉस एस्केरिस। और मेल्स के केस में क्यूटिकुलर एक्सपांशंस आर प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर एक्सट्रीमिटी। और जो सेकंड इम्पोर्टेंट thing in nematode is their digestive system. They do not have like that mammals कि उसमें complete digestive system होगा। इसमें जो important है वो है उनकी esophageal structure. On the basis of the structure of esophagus, the nematodes are classified into various classes. So सबसे पहले nematode have mouth। एक जनरल बता देता हूँ मैं कि they have mouth and mouth is having lips or they may have without lips। अगर लिप्स नहीं होगा तो देन देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स इंस्टेड ऑफ लिप्स। एग्जांपल इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग आईलिडे, लीफ क्राउन इज प्रेजेंट। और लिप्स तो है तो ठीक है, और नहीं है तो इंस्टेड ऑफ लिप्स देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर एज इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग आईलिडे, लीफ क्राउन आर प्रेजेंट। अब इसमें दो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज एम्फिट्स एंड सेकंड वन इज phasmids। तो एम्फिट्स आर द कीमो रिसेप्टर supplied with nerve fiber, and phasmids are also the similar structures, but the difference is that ki phasmid are present at the posterior extremity and the amphids are present at the anterior extremity. So according to the type of esophagus, the classification is, this is very important। इससे एक ना एक ओटी आती ही आती है। या तो आपको आगे समझने में हेल्प करेगा ये, या तो फिर इससे एक तो डायरेक्ट ओटी आएगी। सो फर्स्ट वन इज द esophagus having posterior bulb। सपोज ये इसोफेगस है तो इसमें एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होगा पोस्टीरियर पार्ट में, तो द इसोफेगस हैविंग पोस्टीरियर बल्ब, इसका एग्जांपल है हेट्रेकिस। हेट्रेकिस के इसोफेगस में पोस्टीरियर बल्ब प्रेजेंट होता है। एंड सेकंड वन इज रैबिडिटी फॉर्म इसोफेगस। इट इज प्रेजेंट इन ऑक्सियोरस इक्वाई। एंड थर्ड वन इज क्लब शेप्ड इसोफेगस। क्लब शेप्ड और स्ट्रोंगाइलीफॉर्म इसोफेगस। As the name suggests that it is present in strong eyelid nematodes. Fourth one is filariform esophagus.
in case of filarial worms. इस इसोफेगस में क्या होगा कि इसोफेगस इज यूनिफॉर्मली सिलेंड्रिकल. The filary form esophagus is uniformly cylindrical. Fifth type is cystosome esophagus or trichorid esophagus. In this, the characteristic feature is that it is composed of row of secretory cells. Composed of row of secretory cells. Sixth and the last one is spiroid nematodes type esophagus. In this, characteristic feature is that it is divided into two portions. First one is anterior and second one is posterior. Anterior and posterior portion. So the anterior portion is muscular and the posterior portion is glandular. इसमें जो याद रखना है वो है ट्रेकिस का इसोफेगस याद रखना है कि इट हैज अ पोस्टीरियर बल्ब. रैबिडिटी फॉर्म याद रखना है. बाकी क्लब शेप भी याद रखना है. फाइलरी फॉर्म तो जैसा नाम है वैसा ही उसका एग्जाम्पल है. एंड देन स्पाइरोइड टाइप में याद रखना है कि इट हैज two portions. First one is anterior and second one is posterior. The anterior one is muscular and the posterior part of esophagus is glandular. अब next thing is reproductive system of nematodes. तो reproductive system में as I have already told कि nematodes are unisexual. So in this single testis is present. Was difference. And sometimes seminal vesicle is also present. And a muscular ejaculatory duct which opens in cloaca. तो इसमें जो ओटी के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है इसके स्पिक्यूल्स. तो इन मोस्ट ऑफ द नेमाटोड्स देयर आर one or two spicules are present in most cases. एक नेमाटोड है जिसमें तीन भी प्रेजेंट होते हैं. उसके एग्जांपल भी याद नहीं आ रहा मेरे को. पर इन मोस्ट ऑफ द नेमाटोड्स one or two spicules are present. तो सिंगल स्पिक्यूल्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसके एग्जांपल है ऑक्जियोरिस एंड ट्राइचोरिस. This point you have to remember. Oxyuris and Trichuris have single spicule. Then type of spicules. तो there are many types but जो OT के लिए important है और जो पूछा भी जाता है तो वैसे इसके और 4-5 टाइप्स होते हैं पर जो important है वही बता रहा हूं मैं. तो first one is gumboot type of spicule are present in case of dictyocalus. And barbed type of spicule is present in Haemonchus.
इसको बार्बर पोल वॉर्म भी बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि बिकॉज इन दिस बार्ब टाइप ऑफ स्पिक्यूल इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई हिमोंकस इज आल्सो नोन एज अ बार्बरस पोल वॉर्म. And spicules are absent in case of trichinella. This is an important point. So spicules are absent in trichinella. जैसे स्पिक्यूल प्रेजेंट कहाँ पे होता है? सपोज ये नेमाटोड है, तो इसके पोस्टीरियर पार्ट में, ये यहाँ से तो इसका माउथ हो गया, फिर ईसोफेगस आएगा, फिर सपोज यहाँ पे उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो सपोज दिस वन इज स्पिक्यूल, और स्पिक्यूल के जस्ट पीछे देयर इज वन कॉपुलेटरी बर्सा. सो जिन nematodes में बर्सा इज प्रेजेंट, they are known as, that nematodes are known as bursate nematodes. और जिसमें बर्सा इज एब्सेंट, so they are known as non bursate. And what is the function of bursa? The function of bursa is ki it is used to hold the female during copulation, to hold the female during copulation. अब इस स्पिक्यूल में there are two things. And what is the function of spicule? कि it helps in copulation. How it helps? By expanding the vagina. So जब vagina expand होगी तो there will be easy for the sperms to flow. So the spicules helps in the copulation. Then again इसमें दो चीजें हैं. First one is gubernaculum and second one is telemon. Telemon. तो if the thickening on the dorsal wall of spicular pouch is present, then it is called as a gubernaculum. If thickening on dorsal wall of spicular pouch present, सपोज अगर नेमाटोड से तो यहाँ पे स्पिक्यूल है, तो डॉर्सल होगा, तो अगर यहाँ पे थिकनिंग प्रेजेंट है तो इट इज नोन एज गुबर्नाकुलम, और यहाँ पे है तो दिस इज नोन एज अ टेलेमन. तो इफ द थिकनिंग ऑन डॉर्सल वॉल ऑफ स्पिकुलर पाउच इज प्रेजेंट, then it is known as a gubernaculum, and if it is present on ventral wall thickening, it is known as telemon. Then this was the male reproductive system of nematodes. Then the female reproductive system. In case of female, there is two uterus, two ovary, and vulva. In this, there are three terms which you have to remember. First one is prodelph, second one is opisthodelph, and third one is amphidelph. So
If the genital opening is present in the posterior region, suppose this is the nematode, और इसमें अगर जेनाइटल ओपनिंग इज प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर रीजन, तो इस केस में क्या होगा, जो यूटरस और ओवरी होंगे दे रन फॉरवर्ड. सो दिस इज नोन एज प्रोडेल्फ. मतलब इफ जेनाइटल ओपनिंग is present post in posterior part, so ultimately क्या होगा कि यूटेराई एंड ओवरी runs forward. And if genital opening is present in anterior part, तो अगर जेनाइटल ओपनिंग एंटीरियर पार्ट में होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि यूटेराई एंड ओवरी रन्स बैकवर्ड. तो यूटेराई एंड ओवरी रन्स बैकवर्ड. And amphidelph, the genital opening is situated in middle. So इस केस में क्या होगा कि यूट्रस एंड ओवरी रन्स इन अपोजिट डायरेक्शन. So this prodelph type of arrangement is present in Shabertia, and this ophistodelph type of arrangement is present in Ascaris, and amphidelph is present in Heterachus and Dictyocalus. Then another thing is कि in case of nematodes, males are smaller than female. इसकी एक अपन जनरल सी लाइफ साइकिल देख लेते हैं, क्योंकि सारे नेमाटोड्स की अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है. वी हैव टू स्टडी व्हाट वी हैव टू रिमेम्बर इन द लाइफ साइकिल ऑफ नेमाटोड्स इज दैट कि उसकी कौन सी लार्वल स्टेज इन्फेक्टिव है. इन मोस्ट केसेस द इन्फेक्टिव स्टेज इज द थर्ड स्टेज लार्वा, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन भी है. या तो डायरेक्ट लाइफ साइकिल हो चाहे वो इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में L3 स्टेज ही इन्फेक्टिव होती है नेमाटोड्स की. नेमाटोड लार्वा की L3 इन्फेक्टिव होती है, पर उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं. तो एक अपन जनरल लाइफ साइकिल उसकी देखें तो सबसे पहले जिस भी वो होस्ट में होगा, तो सपोज वहां वहां एग आर रिलीज, देन उससे L1 लार्वा डेवलप होगा, देन L2, देन L3, देन L4. In some cases L5 also develops. जनरली 4 मोल्ड तो उसमें प्रेजेंट ही होंगे, L1, L2, L3 एंड L4. तो इन मोस्ट केसेस L3 is the infective stage. फिर सपोज L3 इन्फेक्टिव है तो फिर वो होस्ट में जाएगा और वहां डिसीज कॉज करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा. तो इसमें से जो फर्स्ट 3 हैं, L1, L2 एंड L3, L1, L2 एंड L3 आर प्री पैरासिटिक. मतलब ये डिसीज नहीं कॉज कर सकते. इन्फेक्टिव स्टेज तो है ये, पर अडल्ट में जाएगी तभी डिसीज होगी. सो L1, L2 एंड L3 आर प्री पैरासिटिक स्टेजेस, which may occur as free living or occur in intermediate host. तो अगर फ्री लिविंग है तो फ्री लिविंग से अगर इन्फेक्शन हो रहा है, सपोज L3 फ्री लिविंग है और उस होस्ट में जा रही, तो इनकेस लाइफ साइकिल कैसे होगी, डायरेक्ट लाइफ साइकिल होगी. और इफ L3 इंटरमीडिएट होस्ट में है तो देन इन दिस केस दूसरा होस्ट उसको खाएगा जो उसका इंटरमीडिएट होस्ट है. सपोज अर्थ फॉर्म में L3 प्रेजेंट है तो L3 को
दूसरा होस्ट खाएगा, तो इन केस द लाइफ इन दैट केस द लाइफ साइकिल इज इनडायरेक्ट. And L3 is generally the infective stages in case of all nematodes. और mostly nematodes are monogenous. Monogenous means they have direct life cycle. Mostly nematodes have direct life cycle. और कुछ उसमें से इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल होते हैं, हेट्रोजेनस लाइफ साइकिल होती है. और in some cases the life cycle is auto heterogeneous. मतलब same host act as intermediate as well as definitive host. So auto heterogeneous life cycle में जो example है that you have to remember, that is Trichinella spiralis. तो Trichinella spiralis life cycle is auto heterogeneous. अब इसमें से जो कुछ उसके एक्सेप्शंस है, जैसे L3 is the infective stage in case of most of the nematodes, तो वो जनरली क्वेश्चन में कौन पूछेगा जब L3 सबके लिए है, तो जो उसके एक्सेप्शंस है ना वो ऑलरेडी क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो if we talk about that nematodes having direct life cycle, so L2, in that case L2 is the infective stage in case of ascarid. और इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे होगा? मोड ऑफ इन्फेक्शन इज बाय इंजेशन ऑफ L2 एस्केरिड्स के केस में. और L3 स्टेज ज्यादातर इंजेशन से ही जाती है. सारे नेमाटोड्स की L3 स्टेज होस्ट में बाय इंजेशन ही एंटर करती है, बट L3 बाय पेनेट्रेशन ऑफ स्किन. It occur in case of hookworms that are strongyloids. फिर L2 that is dormant inside organ or tissue in case of Toxocara canis and Ankylostoma caninum. ये सारी चीजें आपको याद रखनी है. These points are very important. ये तीनों ही पॉइंट. और टॉक्सोकैरिस और एंकाइलोस्टोमा का मोड ऑफ इन्फेक्शन इज बाय प्रीनेटल और ट्रांसप्लेसेंटल. And fourth one is migratory L2 in female mammals. So in case of Toxocara, जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो माइग्रेटरी L2 इन फीमेल मैमल्स है. तो इसका रूट ऑफ और मोड ऑफ इन्फेक्शन इज बाय ट्रांस मेमरी और ट्रांस कोलेस्ट्रल.
अब ट्रांस मेमोरी है तो ट्रांस कोलेस्ट्रॉल तो हो गई, तो ट्रांस मेमोरी और ट्रांस कोलेस्ट्रॉल इन केस ऑफ टॉक्सोकेरा। अब देन नेमाटोड्स विथ इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल, बहुत सारे इसमें, लेकिन केवल मैं एक्सेप्शन बता रहा हूँ, क्वेश्चन में आपसे वही पूछा जाएगा। और कुछ लोग का डाउट ये है उसमें कि जैसे कुछ ज्यादा ही ओटी ओटी हो रही, तो पैरासिटो ऐसा ही सब्जेक्ट है, इसमें ओटी ही ओटी पढ़ना है, मतलब अब वन लाइनर तो नहीं पढ़ना है, पर ऐसे ही पढ़ना है, सारी चीजें नहीं पढ़नी है पैरासिटो, नहीं तो वो 5 साल में भी नहीं खत्म होगा, 5 साल में बीबीएससी हो जाएगी, पर 5 साल में पैरासिटो नहीं खत्म होगा इतना बड़ा। पैरासिटो में सारी चीजें पढ़नी है, पर उससे सोचना यह है कि पूछ क्या सकता है, और जो अलग सा है वही पूछा जाता है। ऐसे नहीं पूछेगा कि एस्केरिस सम इज नोन एज अ लार्ज इंटेस्टाइनल वॉर्म ऑफ स्वाइन, कॉमन नेम कोई नहीं पूछ रहा, वो जमाने चले गया भाई सी यार, थोड़ा कठिन पेपर पूछता है, तो इसलिए पढ़ना सब कुछ है ना, छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि पढ़ना सब कुछ है तो लाइन टू लाइन पढ़ना है। सो nematodes having indirect life cycle. So in this case, L3 inside intermediate host. In case of spiroid, अब इस केस में तो L3 तो सब में ही होता है, लेकिन इसको बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसकी जो लाइफ साइकिल है ना वो इनडायरेक्ट है, स्पाइरोइड की जो लाइफ साइकिल है वो इनडायरेक्ट है, और मोस्ट ऑफ द नेमाटोड्स की जो लाइफ साइकिल होती है वो डायरेक्ट होती है, इसलिए ये थोड़ा अलग सा हो गया कि L3 इनसाइड इंटरमीडिएट होस्ट प्रेजेंट होता है। अगर लाइफ साइकिल डायरेक्ट होती तो L3 फ्री लिविंग होता, और फ्री लिविंग सीधे ही डेफिनेटिव होस्ट में चला जाता, सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाई इट हैज इम्पोर्टेंस कि इसकी जो लाइफ साइकिल है वो इनडायरेक्ट है, और L3 प्रेजेंट इनसाइड इंटरमीडिएट होस्ट इन केस ऑफ स्पाइरोइड, और इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन बाय इंजेक्शन। एंड सेकंड वन इज L3 इनसाइड proboscis of blood sucking insects, proboscis of blood sucking insects। तो ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स के प्रोबोसिस में प्रेजेंट है, तो मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसा होगा, जब दूसरों को फीड करेगा, यानी कि बाई ब्लड फीडिंग, इंसेक्ट जब ब्लड फीड करेगा तो वो ट्रांसमिट हो जाएगा। इसका एग्जांपल में आते हैं फाइलेरियल वॉर्म्स। और ये थोड़ा जनरल नेमाटोड से हट के ओटी ओटी बस के लिए, जैसे कि ट्राइचोरस का जो एग होता है, द एग ऑफ ट्राइचोरस इज डार्क ब्राउन कलर and shape of the egg is barrel shaped, and Spirocerca lupi egg is gelatin capsule shaped. Third one is Oxyuris equi। Oxyuris equi के एग में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रेजेंट होता है, दैट इज operculum। operculum is present। या दो पोल हो गए ना एग के, तो इट इज प्रेजेंट इन वन पोल ओनली, एक ही पोल पे होगा, इस पे दूसरे पोल पे नहीं होगा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अपन शुरुआत करते हैं स्पीसीज से। So in case of nematodes, the family names and order names are also important. So first one is Ascarididae. So in this there are four species.
First one is Ascaris, some. Second, Para Ascaris. Third one is Toxocara. And fourth one is Tox Ascaris. So जो जनरल एस्कैरिडिडे का फीचर होते हैं, they have dorsal lips and they bears two double papillae. They have one dorsal lip and two subventral lips. So this one is dorsal lip and this one is subventral lip and this one is also subventral lip. So dorsal lips bears two double papillae and subventral lips bears one double papillae. So first genus is Ascaris. This Ascaris is a species, not a genus. So first genus is Ascaris. In this, there is one species that is Ascaris sum. It is known as a roundworm of swine, large intestinal roundworm of swine. It is known as large intestinal roundworm of swine. और एस्केरिस में जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई थी कि इसमें जो L2 है, L2 इज द इन्फेक्टिव स्टेज, नॉट L3. इसकी लाइफ साइकिल में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे ट्रैकियल रूट ऑफ माइग्रेशन, तो इसकी लाइफ साइकिल में एक बार बता देता हूँ क्योंकि वो ओटी के लिए तो उतना इंपॉर्टेंट है कि ट्रैकियल रूट ऑफ माइग्रेशन इज प्रेजेंट इन विच पैरासाइट, लेकिन एक बार इसकी लाइफ साइकिल बता देता हूँ. सपोज जैसे फीमेल फीमेल ले एग्स, देन इट पासेस इन फीसिस, फिर देयर इज एम्ब्रियोनेशन ऑफ एग, देन L1 डेवलप्स, देन ecdysis, तो ecdysis L2 develop, then in this case L2 is the infective stage. No, this one is the infective stage. So pig ingests the L2. कैसे भी जा सकता है, by feeding, by feed or by drinking water. So pig में इंजेक्शन हुआ, फिर उसके बाद फिर फीमेल ले. अब इसमें क्या होगा कि आफ्टर इंजेक्शन जो L2 का इंजेक्शन होगा, then this L2 will hatch in small intestine. Then after hatching in small intestine, this L2 will reach the liver through that blood stream. Sorry, it will reach the heart and lung through blood stream, and also reaches the liver. Then what happens? Sometimes this also reaches the spleen and kidney. Then in liver, heart, lungs, spleen, and then L3 develops. Stage will develop. So suppose it is present in the lungs. So then what? This will pass through alveolar,
Here it causes alveolar bronchitis. Then it moves to pharynx. जब ये फेरिंग्स में आएगा ना, यहाँ पे जो चीज समझ है वो ये है कि यहाँ तक तो समझ में आ गया ना सबको, यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. तो जैसे L3 जो है ना, व्हेन इट रीचेस द फेरिंग्स, तो फेरिंग्स पे आया जैसे ही, तो उसके क्या होगा, उसका फिर से, तो जब फिर से उसको खा लिया जानवर ने, सेम ही जानवर ने खा लिया, तो उससे क्या होगा कि इट विल रीचेस द इंटेस्टाइन। और एक चीज यहाँ पे बताना भूल गया मैं, जब यहाँ पे लार्वा जो है वो लंग्स कर रहा है ना, L3 स्टेज जब बन रही है, L2 हैच हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, लंग में गया, हार्ट में गया यहाँ, और उसके बाद ये ट्रैकिया मूव किया, तो इसको पूरे को बोलते हैं ट्रैकियल रूट ऑफ माइग्रेशन। अपन जनरली नाम सुन के क्या सोचते हैं, दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइनल राउंड वर्म ऑफ स्वाइन, तो it will exclusively present in that intestine only, लेकिन here it is to remember that कि it has a tracheal route of migration also. तो यहाँ पे important point ये है कि ascarism has a tracheal, ascarism larva has a tracheal route of migration. फिर उसके बाद फिर से intestine में जाएगा, और intestine से फिर पीसेस के थ्रू बाहर। So this was the life cycle of ascarism. अब इसमें उसके सिम्टम्स और उसके क्लिनिकल साइंस बताने की शायद जरूरत नहीं है इतने सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, ट्रैकियल रूट ऑफ माइग्रेशन, अब फेरिंग्स को अफेक्ट करेगा, ट्रैकिया को करेगा, लंग्स को करेगा तो डिस्निया होगा एंड ऑल दैट, इंटेस्टाइन में जाएगा तो हेमरेजेस होंगे, और हेमरेज होगा तो उसके बाद वही ब्लड लॉस, प्रोटीन लॉस, पॉट बेलीड होगा, कई सारी कंडीशन होगी, प्रोटीनीमिया, हाइपोएल्बिनीमिया होगा, वो सब क्लिनिकल साइंस नहीं बता रहा हूं। उसके बाद जो सेकंड है वो है पैरास्केरिस इक्वरम। Parasquaris equorum is known as a large intestinal roundworm of equines. इसमें जो important चीज है कि the egg of Parascaris equorum has subglobular thick pitted albuminous layer. Egg has subglobular thick pitted albuminous layer. Then it causes bailing up in horses. इसकी भी लाइफ साइकिल सेम एज एस्केरिस. It causes bailing up in horses, full pot bellied condition. Third one is Toxocara. This one is important. The third one is Toxocara. In this, there are three species. First is Toxocara catai. It is present in dog. Second one, sorry, Toxocara catai is present in cat. And second one is Toxocara canis, which is present in dog. And third one is Toxocara vitilorum, which is present in cattle or buffalo. एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जैसे yesterday that Dr. Ayushi was taking class and someone has asked her कि मैम ये नोट्स जो आप लोग पढ़ाओगे इससे पढ़ें कि क्लास के नोट से पढ़ें कि टीचर के नोट से, या तो जो पहले बनाया उनसे पढ़े। तो उसके लिए जो उसने बोला था कि
जो तुम्हारे पास नोट्स है ना, दे आर द बेस्ट। तो वो तुम्हारे सबसे अच्छे नोट्स हैं। अगर मैं और वो जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं, तो उसमें से अगर तुमको लगता है कुछ एक्स्ट्रा है या कुछ काम का चीज है, तो उसी में ऐड करो। देयर इज नो नीड टू राइट अगेन एंड अगेन कि चार नोट्स हो जाए और एग्जाम के पहले सोचना पड़े कि पढ़ें किससे। तो अलग अलग नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर बने हैं तो अच्छी बात है, उसमें ही ऐड करना, और नहीं बने हैं तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो इसी को लिख लो। और बने हैं तो उसमें जो चीजें अलग है उनको बस नोट करना है। तो फर्स्ट species is Toxocara canis, second is Toxocara catai, and third one is Toxocara vitilorum. So Toxocara catai is present in small intestine. It has a prenatal in Toxocara catai, what you have to remember is that कि इसमें जो prenatal transmission that is absent in case of Toxocara catai, and in all species of Toxocara, prenatal transmission is present. Prenatal transmission present. I think this question was asked in 2020 ICR. In Toxocara, generally in all species of Toxocara, prenatal transmission is present, but in case of Toxocara catai, prenatal transmission is absent. And here in Toxocara catai infection, pot-bellied condition in cat is characteristic feature. Pot-bellied condition in cat is characteristic. In case of Toxocala vitilorum, it is present in cattle and buffalo. It mainly affects the newborn, and it is present in small intestine. In this is a very important point. The cattle has mud color feces and also foul smelling, foul smelling feces. Here, in case of Toxocara, the drug of choice is parental palmate. अब इसका prenatal transmission, cholesterol transmission, and direct transmission. There are three transmission in case of the toxocara species. तो इसकी भी लाइफ साइकिल थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। तो I will discuss this life cycle. So the life cycle is direct but complex. It has prenatal transmission or cholesterol transmission, or it may have direct transmission. In case of direct, the paratenic host is involved, that are birds and rodents. Cholesterol transmission is also known as lactogenic transmission, and prenatal transmission is also known as transuterine or transplacental. Transuterine and transplacental. So मोटा मोटा आपको यह याद रखना है कि the Toxocara has three type of transmission, that is prenatal, cholesterol, and direct. So in prenatal transmission, what happens? Suppose there is adult bitch, it ingests the egg of Toxocara canis, then L2 will hatch. L2 will hatch inside that bitch. Then L2 will migrate to liver, lung, kidney,
So during migration there is no development. अगर L2 है तो इन ऑर्गन में जाके वो L2 ही रहेगा. Means there is no migration and sorry there is during migration there is no development. There is no development during migration. Only the larval only the larva will settle in these organs. So this is known as a somatic migration. When bitch become pregnant, suppose when bitch become pregnant, the larva are ये इसी में प्रेजेंट रहते हैं, है ना, ये मोबिलाइज नहीं होते. माइग्रेट ड्यूरिंग माइग्रेशन ये क्या करते हैं, किडनी में, लीवर में, लंग में जाके यहाँ पे सेटल रहते हैं और उसके बाद इनका माइग्रेशन नहीं होता. जब बिच व्हेन बिच बिकम प्रेग्नेंट देन लार्वा आर मोबिलाइज्ड. देन थ्रू transuterine infection they transmitted into puppies. So this is a prenatal transmission. Then they reaches the puppy liver. There they develop into L3 from L2. Then at birth, this L3 will reach the lung of that puppy, then stay there in lungs. Then they develop to L4 in lungs itself. Then they go to bronchiole, bronchi. फिर ब्रोंकाई में गया, फिर उसके बाद फिर से उसका इंजेक्शन होगा, माउथ में आएगा, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू फिर उसका इंजेक्शन होगा. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, देयर इज अ ट्रैकियल रूट ऑफ माइग्रेशन. So in case of Toxocara, there is also a tracheal route of migration. ये ट्रैकियल रूट ऑफ माइग्रेशन अभी एक आध दो बार और आएगा. तो बस ये क्या होता है ट्रैकियल रूट ऑफ माइग्रेशन, आई थिंक अभी तक समझ में आ गया होगा. तो यहाँ पे भी ट्रैकियल रूट ऑफ माइग्रेशन हो रहा है, फिर उसके बाद इंजेक्शन होगा, फिर इंजेक्शन के बाद फिर it reaches to small intestine, then again it comes into feces. Eggs come into the feces. उसके बाद सेकंड वन इज कोलेस्ट्रल ट्रांसमिशन. तो कोलेस्ट्रल ट्रांसमिशन एज द नेम सजेस्ट कि it is transmitted by milk. And third one is direct. So direct by the peritonic host, that are birds and rodents. So in this Toxocara, you have to remember that it has a prenatal transmission, cholesterol, and also a direct transmission. So in last year ICR exam, these three, first, second, and third, what I have told you, this has prenatal, cholesterol, and direct transmission, and fourth option was aerosol transmission. So in last year ICR एग्जाम दे आस्क दैट कि इनमें से कौन कौन सा ट्रांसमिशन टॉक्सोकेरा में प्रेजेंट होता है. तो इरोजोल ट्रांसमिशन is not present in case of toxocara. Aerosol transmission is not present in case of toxocara. Only this prenatal and cholesterol and direct transmission is present. तो प्रीनेटल और कोलेस्ट्रॉल तो हमको याद रह जाता है, बट डायरेक्ट ट्रांसमिशन याद नहीं रहता. तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन इज आल्सो प्रेजेंट इन केस ऑफ टॉक्सोकेरा. Then another species is Tox ascaris. Tox ascaris are also known as arrowhead worm of dog and cat. इसमें there is no tracheal route of migration. एक्चुअली इसका जो लार्वा होता है ना, लार्वा माइग्रेट ही नहीं होता. देयर इज नो माइग्रेशन ऑफ लार्वा. जब माइग्रेट ही नहीं होगा तो क्या ही ट्रैकियल रूट ऑफ माइग्रेशन होगा. तो देयर इज
नो माइग्रेशन ऑफ लार्वा। उसके बाद इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, उनके पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल साइंस है। कुछ स्पेसिफिक से लीजन्स हैं और उनके कुछ स्पेसिफिक से क्लिनिकल साइंस है। तो मेनली अभी तक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि मेनली द डिसीज इज कॉज्ड बाय माइग्रेटिंग लार्वा। So, in case of ascarism, there is pneumonitis and all other symptoms related to pneumonitis and all other symptoms related to lung-like emphysema in and accumulation of WB lungs, desquamation of alveolar epithelium, and the liver shows the milk spot. This one is important. अब वो लीवर में कैसे गया? I have already discussed in last slide. Milk spot in milk spots in liver. They are also known as fibrotic spots. And paraskeris quorum causes full pot bellied condition. पहले ही बता चुका हूं मैं ये. And for its diagnosis of Toxocara is by detecting the migratory larva in sputum or by detecting the eggs in feces, जो कि ज्यादातर nematodes के लिए होता है, by detecting the egg in feces. फीसेस में एग डिटेक्शन की कई टेक्निक है, वो बाद में जब नेमाटोड्स खत्म हो जाएगा तब बताऊंगा. And for its control, there is one disinfectant is there, that is 3% Lysol solution. 3% Lysol solution. If you wash the floor by 3% Lysol solution, it will kills the larva of Toxocara. Next thing is visceral larva migrants. It is mainly caused by the larva of Toxocara catai and Toxocara canis. Mainly by the Toxocara canis, mostly by Toxocara canis. अब ये होता कैसे है कि it does not occur in the normal host of Toxocara catai and canis in dog and cat. When when the larva of Toxocara catai and Toxocanis are eaten by abnormal host. And when the larva of Toxocara catai and Toxocara canis are eaten by the abnormal host, तो इन केस में abnormal host में एंटर कर रहा है तो ये कैसा पैरासाइट होगा? It is an aberrant parasite. So what happens? It hatches inside that host and L2 migrates to lung, liver, etc. Lung and other organs. And through this migration, these are the visceral organs. So larva is migrating in visceral organs. That's why visceral larva migrants migrating in visceral organs. So that's why it is a visceral larva migrants. Mainly caused by Toxocara canis, but visceral larva migrants is also caused by the spirorid, filarid,
and strong eyelid worms also. So visceral larva migrans is caused by spirorid, phylurid and strong eyelid and by Toxocara. And suppose this larva if reaches into eye, so here is causes ocular larva migrans. Here we have to remember that case अब हो कहाँ रहा है? It is occurring in the abnormal host. It is not occurring in case of dogs and cats. And if larva reaches to eye, it causes ocular larva migrans. This was all about Toxocara. Another species is Oxyuris equi. Oxyuris equi. Oxyuris is also known as a pinworm. It also has a direct life cycle. Pinworm of equine. Oxyuris equi is known as a pinworm of equine. The characteristic feature of the egg is that the egg has plug at one pole. Mucoid plug is present in one pole of egg. And life cycle is the eggs are laid in skin of peri, perineal region. Then eggs fall down. Then there is a ingestion of egg. Then it reaches to intestine. Here L3 stages from in intestine L3 to L4 develops. Then adult adult stage develop. Then fertilization occur. Fertilization of worm in cecum and colon. Then again move to rectum and passes out through feces. Here the clinical signs are very important. First one is it causes anal pruritus. ये मैं कुछ कुछ I am telling the life cycle of some nematodes because clinical sign are somewhat related and it will be easy to remember the clinical signs. अगर उनके shows that anal pruritus, so it is present in the anal pruritus. There is a rat-tailed appearance because animal rubs base of tail against hard object. So due to rubbing, hairs will fall. So that's why their tailed appearance. जैसे चूहे की पूंछ में बाल नहीं होते. So that's why rat tail appearance. There is another nematode that is Entrobius vermicularis. It is known as a pinworm of man or seatworm of man. Another family is Hetrachidae.
In this, there are two genus. First one is Heterachus, and second one is Ascaridia. Species is Heterachus gallinarum. It is present in Sika, Foul, Turkey. अब इसके लाइफ साइकिल में जो हेटेराकिस में जैसे मैंने बताया था कि L2 is the infective stage. Here L2 is the infective stage, or it causes petechial hemorrhage in cecal mucosa. Petechial hemorrhage in cecal mucosa. इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि दैट इन दैट प्रोटोजोलॉजी क्लास I told you all that ki Heterachus gallinarum is the carrier of protozoan parasite. It is the carrier of one protozoan parasite. Did anyone knows that it is the carrier of which protozoan parasite? If Plasmilia gridis. हाँ तो Heterachus gallinarum is the carrier of that Histomonas meleagridis. So Heterachus gallinarum is a carrier of protozoan parasite Histomonas meleagridis. And Histomonas meleagridis causes black head disease in Turkey or enterohepatitis. Enterohepatitis or black head disease in Turkey. इससे क्या हेट्रेकिस गैलिनेरम को सॉरी हिस्टोमोनाज मेलियाग्राइडिस को एक एडवांटेज ये मिल जाता है कि दैट प्रोटोजोआ रिमेन सेफ इनसाइड द इन्फेक्टेड एग ऑफ नेमाटोड. उससे क्या होगा वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो जूसेस निकलते हैं उनसे बच जाएगा. सो जो प्रोटोजोआ है हिस्टोमोनास मेलियाग्राइडिस that is present inside the egg of Heterachus gallinarum. तो हिस्टोमोनास मेलियाग्राइडिस तो टर्की का है, ये मैं पहले बता भी चुका हूँ कि that is a protozoa of Turkey and it is a nematode of fowl. So that's why fowl and turkey should not be reared together. Second one is Ascaridia galli. It is present in small intestine of fowl, turkey. And here also L2 is the infective stage. And here there is one thing you have to remember, that is earthworm is the paratenic host. Earthworm is the paratenic host. That L2 is present inside the earthworm and the birds eat the earthworm and the infection and the birds are infected. The disposing factor for Ascaridia galli infection is deficiency of vitamin A, B and vitamin B12. Another nematode is Subulira brumpti. Subulira brumpti. That is also known as pinworm of fowl. Another order is Rhabditida. Rhabditida. In this, there is genus Strongyloides.
स्ट्रोंगाइलॉइडस। स्ट्रोंगाइलस नहीं है, स्ट्रोंगाइलॉइडस, LOI है ये। स्ट्रोंगाइलॉइडस। The strongyloids are heterogenic. They are heterogenic. This is important. ये अभी तक किसी में नहीं मिला है. They are both parasitic. Heterogenic means that they are both parasitic and free living. Parasitic form occurs inside the intestine of vertebrate. Parasitic form occurs inside intestine of vertebrate, and free living form occurs as saprophyte. Saprophyte. Here females are parthenocarpic. This one is also important. Females are parthenogenic. Females are parthenogenic. That means that the growth and development of embryo occurs without fertilization. And their eggs, there may be two chances that they give rise to infective larva. Egg give rise to infective larva, or it develops into free living generation of male and female. And here what I have told in the general nematode section ki esophagus is rhabditiform. Esophagus is rhabditiform. This is important. Esophagus is rhabditiform. In case of free living and in case of infective, the esophagus is filariform. These 2 points are very very important. Ki in case of free living, the esophagus is rhabditiform type, and in case of sorry, in case of infective larva, the esophagus is filariform. And here mode of infection is percutaneous, means through skin penetration. In this first species is Strongyloides papillosus, which is also known as the intestinal threadworm of ruminants. Intestinal threadworm of ruminants. The life cycle is either the combination of parasitic or free living. Life cycle is either parasitic or free living or combination of both. So in this case, the parthenocarpic female are present. That parthenocarpic females are triploid. They are three and they are embedded in the mucosa. Parthenocarpic females are embedded in mucosa of small intestine of host. There they leg sorry there they lay eggs. They lay eggs inside the intestinal mucosa that are passed through feces. They are embryonated egg. Then L1 will develop in open.
that L1 may become L3, which is the infective stage in environment itself. So if L1 develops into L3, here there is one important point. If L1 develops into L3 in environment, then this is known as a homogonic cycle. And if this L1 develops into free living male or female, develops into free living male or female, then it produces eggs, and then egg hatch into L1, then become L3, which is infective stage. So this is known as heterogonic cycle. So this one is homogonic cycle and this one is heterogonic cycle. Then after that, penetration of skin by larva, then L3 will reach into blood, lungs, then alveolar space, then again tracheal route of migration, फिर उसका ingestion होगा, ingestion by the same host, then it reaches the intestine. Here L4 develops, then again that parthenocarpic female embedded in the mucosa of a small intestine. Yes. Here you have to remember that the parthenocarpic female is 3N. Parthenocarpic female is 3N, that is triploid, and free living female are 2N. Female that is 2N. This this female is 2N and is diploid, and this parthenocarpic female which is laying egg inside the mucosa of a small intestine is 3N. And in this case, the free living female only produces one stage, one generation. नहीं कि बार बार अंडे ही प्रोड्यूस करती रहेगी एनवायरनमेंट में रह के, एक ही जनरेशन बस, मतलब एक जनरेशन के लार्वा बनाएगी, बार बार नहीं बनाएगी. देन आफ्टर द फीमेल will dead. Then after female will die. There are other species also. Here one term is there, protandric reproduction. So protandric reproduction is present in case of strong gyloid. Then strong gyloid vasteri, it is present in small intestine of equine. Ransomai is present in small intestine of pig, and stercoralis is present in small intestine of man, and avium is present in ceca of fowl, turkey and other birds. Ceca of fowl, turkey and other birds. इसमें ज्यादातर कंफ्यूजन हमें होता है स्ट्रोंगाइलॉइडिस और स्ट्रोंगाइलस. तो स्ट्रोंग
Gyloides and strong gylus are both other. They both are other species. Strong gylus. Here is strong gyloides and here it is strong gylus. Its life cycle is direct and here first stage larva is rhabditiform in case of strong gylus. So another genus is strong gylus and order is Strongylida. General characteristic of this order Strongylida, it has four superfamilies. This order Strongylida has four superfamilies. First one is Strongyloideae. Second one is Ankylostoma toideae. Third one is Trichostrongyloideae. And fourth one is Metastrongyloideae. The order Strongylida is the biggest order. It is the biggest order. Strongylida is the biggest order of nematodes. So this might be asked in that OT key, which is the biggest order of nematodes. So its answer will be Strongylida. Here corona radiata, which are also known as leaf crown corona radiata. ओवम वाला कोरोना रेडिएटा नहीं, सॉरी ओवम बोल रहा हूँ, हाँ फीमेल्स ओवम में जो मिलते, corona radiata are also known as leaf crown are present. So in this, the genus Strongylus, genus Strongylus. It they are also known as red worms. Here species are Strongylus vulgaris, Strongylus equinus, and third one is Strongylus edentatus. So among the three species, three species among the three species, the Strongylus vulgaris is the smallest of the three. It is the smallest of the three species. Then life cycle is like that ki there is egg, they are passed out in feces, they hatch in environment. Here L1, which is rhabditiform. This is very important point. Ki L1 is rhabditiform means L1 stage larva has rhabditiform esophagus. It molds into L2, then L3, which is the infective larva. It has a sheet. There is another important thing. It is a sheeted larva. Then there is ingestion of L3. Then there is existment in intestine. Then around after 1 week,
It migrate to mesenteric artery. Here, it causes thrombi and aneurysm of blood vessels. This point is very, very important in this parasite. Ki it causes thrombi and aneurysm of blood vessels that is known as verminous aneurysm. Then it migrate back to the cecum and colon. Then again in present in egg. Cecum, colon, rectum, and again passed out in feces. In case of Strongylosis equinus infection, this verminous aneurysm is present in case of Strongylosis vulgaris infection. In case of Strongylosis equinus infection, there is nodule formation. In this case, verminous aneurysm is not formed. There is nodule formation in small intestine. And in case of Strongylosis edentatus infection also, there is no verminous aneurysm. Another is Shabertia. Here the species is Shabertia ovina. Here the important point is that it has a bell-shaped buccal capsule. It has a bell-shaped buccal capsule. Shabertia ovina occurs, as the name suggests, it occurs in sheep. Here, one important clinical lesion is punctiform hemorrhages in mucosa. Punctiform hemorrhages in mucosa. और इंटेस्टाइन में है तो ब्लड सक भी करेगा तो एनीमिया होगा, डायरिया होगा, इमेसिएशन होगा, क्योंकि होस्ट का खाना खुद ही खा लेगा तो उसको कम मिलेगा तो इमेसिएशन होगा, लॉस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगे तो उससे हाइपोएल्बुमिनिया होगा, हाइपोएल्बुमिनिया होगा. इसमें बस इतना इंपॉर्टेंट था. सेकंड, नेक्स्ट वन इज गेप worm. Gape worm. They are also known as forked worms or syngamous. They are present in trachea of turkey, fowl, pheasant, guinea fowl, goose, and various birds. So they are present in fowl, turkey. Simple, so they are present in birds. कई सारे birds में present होगा. They are present in birds. Their shape is Y-shaped. Their shape is Y-shaped. The name syngamous इसलिए पड़ा कि they remain in permanent copulation. Male and female remain in permanent copulation. In this, there is a marked sexual dimorphism. In this case, eggs have in case of syngamous, eggs have operculum.
both pole. Here it is present in turkey birds, trachea of turkey birds, trachea of turkey and pheasants, guinea fowl goose. तो इसके जो क्लिनिकल साइंस है उसमें आएगा गेपिंग मूवमेंट, गेपिंग मूवमेंट मतलब गेपिंग मूवमेंट का मतलब कि द माउथ इज वाइड ओपन माउथ. सेकंड वन इज गैस्पिंग साउंड. इसमें इतनी चीजें इंपॉर्टेंट. एंड द लास्ट वन इज इन दिस बेरियम एंटीमनी टार्टरेट inhalation is used. Barium antimony tartrate inhalation. Barium antimony tartrate inhalation. Another one is esophagus tumor. Esophagus tumor are also known as nodular worms. They are also known as nodular worms. They are known as nodular worms because their larva forms nodules in intestinal wall. Another important thing is कि the mouth is surrounded by mouth collar. Suppose this is mouth and the mouth is surrounded by a mouth collar. Mouth is surrounded by mouth collar. Life cycle is egg in feces. Here L3 is the infective stage. Ingestion of L3. It reaches to the intestine. Then cysts are formed around them, around the L3. So जब cyst बनेंगे तो that nodules are also formed. Then it again returns to lumen of intestine. ये intestinal wall पे जाके attached है अभी, फिर wall से lumen में आ गया. Then some larva fails to return at lumen. फेयर्स टू रिटर्न टू ल्यूमन. तो इन दिस केस में क्या होगा कि जो लार्वा ल्यूमन पे नहीं आ पाया है तो वो इंटेस्टाइनल वॉल पे अटैच रहेगा. तो इन दैट केस देयर इज एक्सेसिव नोडुलेशन ड्यू टू द remaining larva that are present in the intestinal wall that are failed to return to the lumen. Then again acts in the feces. In this the species is esophagus columbianum. Columbianum. It is present in cecum and colon of sheep, goat, and camel.
Another species is Esophagastomum venulosum. It is present in sheep, goat, deer. Here, Esophagus columbianum forms nodules, and Esophagus venulosum do not forms nodule, do not form nodules in intestine. Another species is Esophagus asperum. It is present in cecum and colon of sheep and goat. Another one is Esophagus radiatum. It is present in colon of cattle and buffalo. Another is Esophagus dentatum. It is present in pigs. Another is Esophagus brevicordium. It is also present in pigs. Now here you have to remember 2 points, that Esophagus venulosum and Esophagus dentatum. They do not have cervical LA. They do not have cervical LA. Cervical LA क्या होते हैं, मैंने पहले बताया कि they are the cuticular modifications. So Esophagus venulosum and Esophagus dentatus do not have cervical LA. अब its pathogenesis or symptoms. So in sheep and goat, it causes nodular worm disease, which is also known as naughty gut. Not naughty, it is naughty. Naughty gut and pimply gut. In this case, two situations may be present. Two conditions may be present. First one is if the sheep is exposed to the first time, means if exposure is of first time, and if the exposure is old or reinfected, पहले एक बार हो चुका है, if the reinfected animal, in case of reinfected animal, there is nodule formation in intestinal wall. Here it is known as a pimply gut, and if the exposure is first time, there is no nodule formation. You have to remember this कि अगर reinfected animal है तो उसमें होता है naughty gut, not in case कि वो पहली बार infected हो रहा है. So if the exposure is for the first time, then there is no nodule formation, and if the animal is reinfected, then there is a nodule formation in the intestine. And there is a dark green diarrhea, which is a peculiar characteristic of esophagus infection. It is dark green diarrhea. There is also a bottle jaw condition. For control of esophagostomum, there is one policy that is known as guilt only breeding policy in sheep. Another one is kidney worms. There are two kidney worms that are Staph anurus and Dictyophyma. In Dictyophyma, there is one species that is Dictyophyma. इसके लाइफ साइकिल और पैथोजेनेसिस उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस नाम याद रखना है कि there are two kidney worms. That first one is Staph anurus and second one is Dictyophyma.
In this dictyophyma, there is one species named as dictyophyma. It is the largest nematode known. Dictyophyma renale is the largest nematode known. It is also known as a kidney worm of dog. Kidney worm of, and its intermediate host is annelid. Annelid named Limbriculus variegatus. And its egg, this is a kidney worm, so eggs are present in urine instead of feces. And Staphylococcus dentatus, there is one species in Staphylococcus, that is Staphylococcus dentatus, that is a pig kidney worm of pig. So Dictyophyma renale is the largest known nematode and it is a kidney worm. And Staphylococcus dentatus is the kidney worm of pig. And here earthworm is the paratenic host. Earthworm is the paratenic host. Another worm is the acanthocephala. Acanthocephala. It is also known as Macracanthorancus. It is also known as thorny-headed worm or spiny-headed worm. Discovered by Joseph Coyle-Reuter. The characteristic feature of this worm is that it has proboscis armed with hooks. There is one species that is Macracanthorancus hirudinaceus. Hirudinaceus. It is present occasionally in dog. Its another one is hookworms. In hookworms, there are family, two order. Sorry, first one is Ankylostoma and Bunostomum. And genus and there are two genus, not family. In hookworm, there are two genus, Ankylostoma and Bunostomum. Genus Ankylostoma are voracious bloodsuckers. Species are Ankylostoma caninum. This is an important parasite. So Ankylostoma caninum, it is present in dog. Second one is Ankylostoma brasiliensis. Brasiliensis is present in dog and cat.
Third one is ankylostoma tubiforma. It is present in cat and in buonostomum. There is buonostomum trigonocephalum and buonostomum trigonocephalum is present in sheep and goat small intestine. And another species is buonostomum Phlebotomum. It is present in a small intestine of cattle and buffalo. So, life cycle of Ankylostoma caninum is important. Ankylostoma caninum. So, its life cycle is direct. Eggs are present in feces. That the egg embryonate in open. They do not embryonate inside the body. They embryonate in open. Here L1, then L2, then L3 develops, and mode of infection is by skin penetration. This is important, by skin penetration. Then by skin penetration, it reaches to the bloodstream, then it reaches the lungs, where it develops into L4, then it reaches trachea and, and swallowed. Then again swallowed. Here also tracheal route of migration is present, then swallowed, then reaches small intestine, then again it reaches. And this is by skin penetration. And suppose if it is by ingestion, suppose the L3 is ingested, then and then again swallowed and reaches small intestine and again present in the feces. And in ankylostoma caninum infection, important thing in case that L3 larva and also migrates to the skeletal muscles, migrates to and muscles, and here it remains dormant. And when the bitch become pregnant, during pregnancy, L3 is reactivated again. The dormant, the L3 which is dormant, it reactivates again. It reactivates again. It is passed in milk. तो इसमें ये याद रखना है कि जो एंकाइलोस्टोमा कैनाइनम का इन्फेक्शन है दैट इज ट्रांस मेमोरी और कोलेस्ट्रॉल और लैक्टोजेनिक ट्रांस मेमोरी कोलेस्ट्रॉल और लैक्टोजेनिक clinical signs of ankylostoma hookworm disease high
increase in blood volume, to increase in water content of plasma. Second one is lassitude, which means lethargy. और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है एनीमिया। और एनीमिया में भी कैसा है, सबसे पहले फर्स्टली इट इज नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एंड डेवलप्स टू माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया, साइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इन एंकाइलोस्टोमा इन्फेक्शन विच टाइप ऑफ एनीमिया इज प्रेजेंट, तो करेक्ट आंसर होगा माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। और अगर इफ इट आस्क्स स्पेसिफिकली दैट कि फर्स्टली विच टाइप ऑफ एनीमिया इज प्रेजेंट, देन इट इज नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। द क्वेश्चन की firstly which is produced and later on which type of anemia is produced, then procytic hypochromic. The ankylosing blood daily, blood per daily. In sheep and goat, buinostomum trigocephalum causes bottle jaw condition. There is one species phlebotomum. It is present in cattle. It causes itching due to skin penetration of larva. There are two other species. First one is globocephalus, which is known as a pig hookworm. Pig hookworm. Another species is Barthomostomus, which is known as the elephant hookworm. So it's all for today. We will study other parasites from tomorrow. The nematodes is a very big topic and it's a boring too. तो पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसे ही है, अब क्या करेंगे। और कुछ अलग से भी इसमें बता पढ़ा नहीं सकते ना, बस जो जो है वो लाइफ साइकिल ही है, जितनी भी है समझने वाली, बाकी सब कुछ याद करने का ही है इसमें, इसलिए बहुत बोरिंग है। इसलिए मैंने पैरासिटो पहले ही पढ़ा है, पैरासिटो वैसे भी बोरिंग। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और जो बाकी बचे हुए नेमाटोड्स हैं, अभी बहुत सारा बच गया, अभी आई थिंक आधा ही हुआ है। बाकी जो बचे हुए नेमाटोड्स हैं वो आई विल टेक टुमारो। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई एम गोइंग टू एंड द क्लास।